Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Now, in today's session, we are going to start with very important topic that is strings in JavaScript. Strings are extensively used when you're doing a lot of web development work. At many places, you have to deal with strings. So we'll be discussing from very basic what are strings, then what are different ways to create string, then template string means what, multi-line string, different string methods, different methods are there for case conversions, for searching, for extracting, for replacing. So all that we will cover under this topic. Okay? So first we'll discuss about what is a string. Very simple terminology. You can say string is any sequence of characters. Now that characters can be letters, uppercase, lowercase, they can be digits, special symbols, they can be escape sequences, they can be even emojis and any Unicode. Means they can be Joheb character, Hebrew character, Devanagari characters, Japanese characters, Chinese characters, anything can be included. Okay. Why? Because JavaScript is meant only for web, and web is the interconnection of heterogeneous machines of whole globe. So all the types of characters are allowed. You can use emojis as well as everything within that string. So any sequence of characters, okay, enclosed in single quote or double quote or backtick also. Here one backtick concept is also there. So using that backtick or single quote or double quote, anything is allowed. It is called as a string. And internally, it is a elementary data type of JavaScript called string. String is a elementary data type. In the beginning, we have discussed when we studied data types. So we discussed number, then boolean, BOL, string, undefined, null, getting or no, array, object, all those data types when we studied string data type also. Okay. So what a string? Any sequence of characters enclosed in single quote, double quote, or backtick. There is some speciality about backtick. Backtick can be extended to multiple lines, but single quoted and double quoted, you cannot extend to more than one line. Getting? Means if you are trying to extend that single quoted or double quoted to more than one line like this, it's not allowed. Can you see? It itself gives you a error. Whatever you are writing, it is giving a error because single quoted strings cannot be single or double cannot be extended to more than one line. See, immediately the color becomes same. But if it is a backtick, then in that case it is allowed. See, you can extend to any number of lines. So all that things one by one we will discuss. Don't worry. Okay. And speciality of that string is it is immutable. Immutable in the sense once you create that string, you cannot modify it. You can create new strings, but the main string cannot be modified. Like if here we have hello and I want to modify that H to P is not possible. Maximum what you can do, you can take another string P, then take the remaining string leaving H from the original and then concatenate them and create again a new string. But you cannot modify that H to P. In place changes are not allowed because it is immutable. And strings can be index based accessed. You can access them on the index basis 0, 1, 2, index starting from 0. So index based access is allowed. Okay? And one very important, it is immutable that you have to remember. So a string is a sequence of characters used to represent text in JavaScript. Any text information, use string. Okay, and string is treated as a primitive type, elementary data type, the basic data type which JavaScript has provided. It is not like array or objects. Objects we create, array we create.
You can say they are derived type. They are like user defined, but this is inbuilt. String is inbuilt provided. So strings are one of the primitive types in JavaScript and they are immutable. Immutable means you cannot change the string in place. In that place only, that letters you can replace with another letter is not allowed. Same in Java also. Java also class string is immutable. Therefore, they have given string buffer and string builder and all those things. Right or no? So main characteristics you should remember. It is immutable. Then you can access it on the index basis. Then within that string, you can have any characters, letters, digit, uppercase, lowercase, emojis, any alphabets of the whole globe, everything is allowed. So strings are immutable. Immutable in the sense, I hope you got it. Whatever string is created, you cannot make change in it. You can create new. Operations create new string rather than modifying existing one. They will create a new. Just now I gave you an example, hello. So I want to make that H as P. So you have to take another string P, then extract everything after H from the original, then concatenate these two strings and create a new string. Getting? And you can access string on the index basis. It is zero indexed. First character is at position 0. And string can contain any Unicode. Unicodes means universal characters. Universal character means it includes all the ASCII characters also, like all the standard keyboard character, A to Z, upper, lower, 0 to 9, special symbols, escape sequences, all that, plus some Latin characters are also there. Latin characters, you get it on WhatsApp and all also. Like this, like it is having some backtick. It's called as grave ascent, or you have that cap and all. These are all Latin letters. Like as we have in English, English में sorry English नहीं अपने हिंदी में और मराठी में कैसे स and श का pronunciation अलग होता है ना, श अलग pronounce होता है and स अलग होता है. तो here also similar pronunciations are. वो स्कोडा गाड़ी होती है ना, स्कोडा स्कोडा कार, तो वो कार का स्कोडा का स्पेलिंग पे भी देखो ऊपर ऐसे कैप होता है बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट इज स्कोडा स्कोडा लाइक दैट, राइट? तो एनीवे लिटरेचर में नहीं जाएंगे. कहना है कि दैट लैटिन लेटर्स आर देयर एंड देन ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द ग्लोब. सो जोहेब आर देयर, अरबिक इज देयर, देवनागरी इज देयर, जापानीज है, स्माइलीज है, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है. ठीक है? एंड whenever you try to do comparison of any string, it is always done alphabetically, which is also called lexicographically. So whenever you are trying to compare any string in JavaScript, like I'm comparing double quote ABC less than double quote A, something like that. Okay, it is going to do alphabetic comparison. So A and A is same. So it will check B and A. But B is not less than A. Therefore, here you'll get answer false. Alphabetical order. I hope you know it. Alphabetical order. A, J, I, T if I take. And A, J, A, Y if I take. So first A is same, J is same. The third letter. Now in third letter, I and A. So A is first. So in alphabetic order, Ajay will come before Ajit. Get it? So here the comparison is alphabetically, also called as lexicographically. Okay? Then how to create strings, all one by one we will learn. Okay? The basic idea, I hope you got it. Now how to create strings. One easy way is by using string literals. String literals means constant strings, which you can directly assign it to a variable and enclose it in a single quote, double quote, or triple quote. So suppose I'm creating S1 equal to single quote hello or double quote hello or backtick hello. All are strings. And there is another way also by using constructor.
using new operator and string constructor like this equal to new, which is not recommended, highly not recommended. Don't use this way to create a string, because in that case, it is first of all allocating separate space, and means suppose S1 is hello and S2 is also suppose hello, exact same. So they both will not take separate memory. They'll use the same pool object. Means in the pool, it will create one hello, and S1 will also refer to the same hello, S2 will also refer to the same hello, because anyway it is immutable. So why to create two different copy? Suppose S1 is single quote hello, S2 is also single quote hello. It will not allocate separate memory. They both will, S1 and S2 both will be referring to the same hello only. Here it won't happen. Here it will keep allocating separate memory. Getting? To that I'll pass hello. And suppose one more I create new string double quote hello. In that case, both are having value hello, but their memory is different. Getting? They are not referring to the same hello. S2, S3. S3 is also new string round bracket hello. So this S2 will be referring to different memory, S3 different memory, though both are having value hello only. That is one point. And second, that's why generally JavaScript community discourage using this new operator for creating string. Use this string literals only. A good practice is this one. Okay, so ये एक difference है, is separate memory. And second, when you check their data type, they are not string type, they are object. ये object treat होगा. ये string ही है, but ये object है. Getting? इसका proof भी आप देख सकते हो. I'll go to inspect and I'll show you here. Console. ठीक है? See here. Let S1 equal to hello if I'm writing, and let S2 equal to hello. ठीक है? And if you check their type of S1, it prints string. Getting? But suppose if I create S3 equal to new string and I give hello. Okay? And now if I check type of S3, it will give object. So it is not treated as a variable of string type. It is automatically a variable of object type. Data types only come different. Getting? And therefore, when you try to compare them by using 3 equal or something, 3 equal we have discussed. I hope you know it. 2 equal, 3 equal. 2 equal do conversions. We have done, guys, all this in the past. So when we use 2 equal, coercions are there. Casting can happen. 3 equal, never do casting. It checks the data type also, value also. So when I try to compare S1 triple equal S3, getting? It will give false. Why? Though they both are having hello only, but still it is 3 equal. Type conversion doesn't happen. And as they both are of different data type, S1 is of type string and S3 is of type object, directly it gives false. But the same thing if I do it by 2 equal, okay, it gives true. Though they are of different data type, S1 is of string type, S2 is of object. Why? Because here the castings are happening. S1 is string, S2 is object. Here it will call dot to string, S2, which is of type object. It will call dot to string. And what will that dot to string return? Hello. And this is hello. Then hello and hello is same. You get it true. So that are the basic differences between creating using new and literal. Directly writing in single quote, double quote,
or doing it using new. Okay. And there is a casting function also. If you want to convert anything to string, only write string. Don't write new over here. Like you want to convert a number to a string. So you can give a number to this casting function. You'll get a variable and a value, which is a string 125. It's a string only, but string 125. Okay, so that is also possible. See here. So first way is by using single quote. Getting? Let str equal to hello world single quote. Then, if you want a single quote within single quote, already it is a single quoted string. And within single quoted string, if you want single quote, you have to escape it. This backslash is saying that please don't treat this single quote as a start of a string. Normally, single quote indicates start of a string. But this backslash is telling please don't treat single quote as a start. Treat it as a single quote only. सिंगल कोट को सिंगल कोट ही ट्रीट कर, एक स्ट्रिंग का शुरुआत मत ट्रीट कर. Getting? Actually, single quote is a meta character. It is a character of syntax. Syntax का character है. सिंगल कोट बोलता है कि यहां से स्ट्रिंग शुरू हो गया, सिंगल कोट आया स्ट्रिंग खत्म. तो सिंगल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर ही अगर सिंगल कोट चाहिए तो आपको एस्केप करना पड़ेगा. एंड ये नहीं लिखोगे तो इट विल बी इनकम्प्लीट, सिंटैक्टिक एरर आएगा. ये नहीं लिखा तो देखो, अगर हमने लिखा है इट्स का ये कोट एंड ये अ बर्थडे, तो व्हाट विल हैपन, दिस पार्ट हैज गॉन इन अ स्ट्रिंग बट दिस रिमेन्स ओपन ओनली, इनकम्प्लीट रह गया. तो आपको ये बीच वाला कोट जो है वो कोट ही चाहिए था, नॉट एज अ स्टार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. देन यू विल पुट बैकस्लैश. तो बैकस्लैश इज एस्केपिंग. एस्केपिंग मींस इट्स नॉट इग्नोरिंग, इट इज नॉट कंसिडरिंग इट्स मीनिंग. उसका जो मीनिंग है वो नहीं ले रहा है, वो जैसे है वैसे ही रख रहा है, कोट को कोट ही रख रहा है. गेटिंग? एंड सेम प्रॉब्लम डबल कोट में डबल कोट. हाँ, बट सिंगल कोट में डबल कोट चाहिए तो एस्केप करने की जरूरत नहीं है, एंड डबल कोट में सिंगल कोट चाहिए तो एस्केप करने की जरूरत नहीं. देन यू कैन डू यूजिंग डबल कोटेड ऑल्सो. सी डबल कोट हेलो, हियर शी सेड हाई, एंड हाई मुझे डबल कोट में दिखाना था, तो डबल कोट के अंदर डबल कोट चाहिए था, इसलिए एस्केप किया. Getting? See here, console.log, and you're writing hello डबल कोट. बट मुझे प्रिंट ही हेलो को डबल कोट में करना है. तो इफ आई राइट डबल कोट हेलो डबल कोट, इट वोंट वर्क गाइस. ये जो हेलो है वो स्ट्रिंग के बाहर आ जाता है, क्योंकि यहां स्ट्रिंग खत्म हो गया और ये नया स्ट्रिंग है. हेलो इज नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. तो आपको जो सेकेंड एंड थर्ड डबल कोट है वो एस्केप करना था, इग्नोर. You don't want it to be treated as start of a string. Then you'll put backslash. Okay? Now what will happen? Backslash double quote will keep double quote as it is. This also will keep double quote as it is. Okay? Same is the case for single quoted strings also. Okay? अभी यहां मुझे अगर ABCs ऐसे लिखना था, ये नहीं चलेगा, तो ये बीच का सिंगल कोट एस्केप करूंगा. So now it gives ABCs quotes. ठीक है? तो डबल कोटेड स्ट्रिंग्स है, सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स है, फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग्स है. टेम्पलेट स्ट्रिंग मींस बैकटिक, ऐसे बैकटिक. एंड टेम्पलेट स्ट्रिंग की खासियत क्या है? इट डज इंटरपोलेशन, मीनिंग बैकटिक वाले स्ट्रिंग में wherever you get brace bracket variable with a dollar, it will replace it with its value. That is the speciality of template string. And one more speciality of template string is you can extend it to any number of line, which double quote and single quote you cannot. ठीक है? देखो, बैकटिक हेलो वर्ल्ड लिखा है, चलेगा. ये एक वेरिएबल है नेम जिसमें राम है. And can you see it is interpolated within backtick? You have written dollar brace bracket name. Will it replace over here the value of that name? What is value of name? Ram. It will replace here.
ठीक है. And fourth way is by using string constructor. New. Getting constructor means वो magic method होता है, which is used for creating objects. ठीक है. So here you can see let str1 equal to new string bracket double quote hello. But please remember here it allocates separate spaces. ये वे से अगर मैंने लिखा let s1 equal to hello, let s2 equal to hello, both are referring to the same hello. वो हेलो एक ही जगह पे पूल में बना रहेगा एंड दोनों एक ही हेलो को रेफर करे, यहां नहीं. ये कंस्ट्रक्टर से हर बार नया ऑब्जेक्ट बनाते जाएगा. क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. It is not recommended because it is a waste of memory. Unnecessarily, why to duplicate the same string? Because anyway, it's not going to get changed. वो immutable है. तो unnecessarily copy क्यों create करना है? तो ये स्टाइल जनरली रिकमेंडेड नहीं है, बट फैसिलिटी दिया है. एंड ये तो कास्टिंग फंक्शन है. It is casting string, sorry, number to string. Okay, I showed, I guess. No, no. See, string of 123. Okay, you can do conversion of anything. 4.5 also. Booleans को भी convert कर सकते हैं. No, sorry, true small है ना. Sorry, Boolean को भी कर सकते हैं. ये T capital in Python ना, तो it got confused. T true is Boolean, उसको भी string में convert कर दिया. तो ऐसे कर सकते हो. कन्वर्जन्स के लिए ये वाला यूज करो. एंड न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये कंस्ट्रक्टर स्टाइल यूज करो. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. ऑल द वेज आर क्लियर, राइट? देन सर, हाँ, ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं सर, वो रिकमेंडेड नहीं है, नहीं तो किस सिचुएशन में इसको यूज होता है? व्हेन यू वांट टू कीप इट सेपरेट ओनली, लाइक मींस आपको वो पूल से नहीं रेफर करना है, वो कॉपी अलग ही रखनी है. यू डोंट वांट टू कीप इट इन द पूल, देन गो फॉर दिस. ओके. और भी सिचुएशंस होंगे, फाइंड आउट करते हैं कि इसका क्या है. बट जनरली जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी highly discourage karta है using. But whenever you want it as a separate copy, you don't want to refer it from the pool, that time you can go for this. Okay. But we'll find out है क्या और कुछ वे और भी कुछ applications है क्या उसके. ठीक है. Then we'll take some examples of declaration, different declaration ways of string. First, by using string literal, meaning creating a string object, not object. New से नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो देखो let primitive1 equal to double quote hello, primitive2 single quote hello या backtick. But these all are of data type string. They are not of object type. ये object type के नहीं बनेंगे, ये string type के. And string type का बनाते हो तो देखो let object equal to new string pass string. ठीक है. This is a object. अगर इसका डेटा टाइप चेक किया तो its data type is object. Here if you check the data type, its data type is string. Okay, see here. Type of primitive1 is string, but type of this one is object. Understanding? And इसलिए जब हम ये compare करने जाता है, if you compare primitive1, just double equal to से compare कर दो to object. तो in this case, it will do implicit casting. जब डबल इक्वल होता है तब कास्टिंग ऑपरेशंस होता है. कोएर्जन, उसको टाइप कोएर्जन कहते हैं. ओके. तो ये P1 मींस प्रिमिटिव है, वो ऑफ टाइप स्ट्रिंग है. ओके. अब ये ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट है, तो ये इम्प्लिसिटली डॉट टू स्ट्रिंग नाम की मेथड कॉल करता है, जो ये ऑब्जेक्ट में रखी हुई स्ट्रिंग लाके देगा. एंड फिर वो दो स्ट्रिंग्स क्या हो गए, लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर हो गए. Getting? But if you do it by 3 equal, it will not do this casting concept and all. It will first only check the data type. If the data types are same,
then it will check the values. And if the values are also same, then true. But if the data type itself is different, डायरेक्ट आंसर false. तो इसमें डायरेक्ट false ही आएगा क्योंकि इन दोनों का डेटा टाइप ही अलग है. The data type only is different. This is object and this is string. ठीक है? तो different ways है create करने के लिए. Then every string, whenever you create, it will have one property. वो string भी तो object ही बन गया. तो internally it is having one property called length, and in which what will be stored? The number of characters in that string. Okay, वो string में कितने characters है? So that you can make use of this length to traverse that string. ठीक है? तो returns the number of characters in a string. See, string dot length. Whatever your string object dot length. Example दिखाता हूँ देखो. जैसे कुछ examples में just normal standard string है. This is a standard string. Hello space world. So this is 5 and 5, 10 and 1 space 11. तो string dot length कितना आया? 11 आया. ये empty string है. तो इसका length अगर हम लेते हैं, empty string का अगर length लिया, तो it gives you 0. But in this case, you have an emoji. So they come under Unicodes and they take 2 bytes. मैंने 2 size. One emoji is 2 byte. Correct? So emoji counts as 2. क्योंकि वो स्टैंडर्ड ASCII चार्ट के बाहर जाता है. तो आपकी स्टैंडर्ड ASCII चार्ट ये 1 बाइट की है. 1 बाइट के बाद में जो एक्सटेंडेड है, दैट इज ऑल यूनिकोड कैरेक्टर्स. तो इसका अगर लेंथ लिया तो ये 5, 6 और ये 2, therefore 8 आता है. And the benefit of that length is you can use it to traverse this string. ये string को traverse करना है character by character. See, you can treat it like a array. ये square operator ऑलरेडी ये स्ट्रिंग पे ओवरलोडेड है. तो str of I एंड फॉर लूप चला है I इक्वल टू 0 टू I लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ. तो देखो I अगर पहली बार 0 है तो व्हाट इज str of 0? H. str of 1 is E. str of 2 is L. This way one by one characters it will give you. ठीक है? I'll give you demonstration of it. We'll take another, that is string demo now. Just string 1. Okay, console.log and str1.length. You can print and see. It will give hello. Sorry, hello 5, world 5, and one space 11. You can use it for a for loop as well, standard for loop. Here we are using I'm not changing that to I. I'll keep it as it is. Index equal to 0, index less than str1.length, index plus plus. And suppose I want to print each and every character. So I'll take console.log and str1 of index. Okay. And what we'll do is we'll try to create one string with emoji also. Okay. Hello. This is 5, 6, and one emoji we can find out from any emojis you can take. Just check. Emojis will be taking 2 characters. Okay. Suppose I'm taking that emoji and I'll put it in the editor.
Okay. And now if we want to print the length of that string, str2 dot length, you can check the length. See, can you see the output? First case, it has given 11. See, it has printed 11. Then in this loop, it is printing that hello world. Okay. Whenever the characters are repeated, just for taking the less space, it just gives you the frequency of it. And last, can you see here you're getting 8. Why? Because this emoji is going to take 2 space. Okay? So that is clear. Then about string immutability, which I've already told you, strings are immutable, meaning it will not allow you to do changes in the original string only. If you're trying to do like this, suppose you're having a string, let L or S be equal to hello, and you're trying to do S of 0 equal to some J letter I'm putting, and console dot log and S. Actually, what I'm trying to do is I'm trying to replace that H with J by accessing it on the index basis, which is allowed in arrays and all. If it is an array, we can do changes of elements. Okay? But in this case, see, has it done any changes? Your original string S is as it is. It is not at all making any modification. So irrespective you try to store it, JavaScript engine is simply ignoring this. And if you check your original string, it is as it is, hello. It is not at all changed to JELLO. If you want, you can do it by doing the separation and all that things. Okay. You can create a new string like this. See, J plus, and then you can do concatenation. S dot slice 1 I'm giving. So from 1th position till the end. From 1th till end. So 1th is E till LLO. Now this again joined and you get a new string. The old is gone. So this is not making changes in the original. It is creating a new string. Getting guys? See. Now it is JELLO. But it has not modified that H to J. We have done it in this another way. We took J, then we took the remaining, we concatenated, we created a new string. That new string reference have stored in S, so old reference gone. Okay? So that rule you have to remember. So you cannot do modifications. Strings cannot be changed in place. And this is what I was doing. I'm trying to change it in place only. ना? String के ही 0th position पे J रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नहीं possible है. See, let str equal to hello, str of j equal to j, and then you try to print. कुछ change नहीं हुआ है. अगर आपने string print किया वो वैसे का वैसे ही रहेगा. Getting? And अगर आपको ये change करना है तो in place तो changes नहीं कर सकते, तो you have to create a new string. Operations return new string. देखो, this is your original string. So you took j plus then all the remaining. Slice नाम की एक method है जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग लाके देता है. तो आई हैव गिवन पोजीशन 1, एंड नहीं दिया है, तो इट विल गो टिल द एंड. तो 1 से लेके एंड तक ELLO. तो ELLO एक स्ट्रिंग, J एक स्ट्रिंग, ज्वाइन न्यू स्ट्रिंग. प्रिंट करके देखो. ये ओरिजिनल जो हेलो है वो वैसे ही है इंटैक्ट. उसका रेफरेंस इसमें से गया और ये नए स्ट्रिंग का रेफरेंस इसमें आ गया. ठीक है? तो इसमें वन इंडेक्स के बाद का, वन इंडेक्स से बाद तक का वैल्यू लिया है और एच को जे से चेंज कर दिया है ऐसा. हाँ.
क्योंकि इंडेक्स 1 है, 0 नहीं है ना। नहीं, इंडेक्स 0 से ही शुरू होता है, इंडेक्सिंग 0 से बट ही शुरू होता है यहाँ। लेकिन हम लोग जो स्लाइस किए हैं उसमें इंडेक्स 1 है। तो ये ई से शुरू किया ना उसने। हाँ, ई से शुरू के लास्ट तक। स्लाइस कहाँ से लिया? 1, तो 1 पे कौन है? ई। 0 पे एच है। इंडेक्सिंग 0 से ही शुरू होगा, नॉट लाइक एसक्यूएल। एसक्यूएल में इंडेक्सिंग 1 से होता है, यहाँ प्रॉपर सी जावा सेम है, एंड जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज सेम। तो स्लाइसिंग चालू कहाँ से किया? 1 से, दैट इज ई। सो ई से लेके पूरा रिमेनिंग, तो क्या आ गया? ई एल एल ओ। और पहला स्ट्रिंग क्या है आपका? जे। ठीक है, तो ये हाँ, जे और ये दोनों कॉन्कैट होकर क्या बना? ये नया। और ये नया जो बना है वो वापस हमने किस में रेफरेंस कलेक्ट किया? एसटीआर में। यार मैं तो एसटीआर में पुराना जो हेलो का रेफरेंस था वो गया, और ये रेफरेंस आ गया। तो बाय डिफॉल्ट न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर देता है ये मेथड। हाँ, वही बताना है ना। इट विल नॉट अलाउ यू टू डू चेंजेस इन प्लेस, दैट इज व्हाट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल मीन्स इट विल नॉट अलाउ यू टू डू द चेंजेस इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ये एच को पी नहीं कर सकते हो, या एच को जे नहीं कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप ये ऐसे नया स्ट्रिंग बिल्ड कर सकते हो, ये राइट। गेट गॉट इट। ओके, फिर स्ट्रिंग्स में क्या क्या अलाउड है? तो ऑलरेडी हमने देखा कि स्ट्रिंग अलाउज यू कैरेक्टर्स एंड digits and special symbols, escape sequences, and they say it is allowed to use all the universal characters also, like Japanese character. You can use even our Devanagari characters. Devanagari means जो अपनी हिंदी मराठी संस्कृत के, they are all Devanagari. तो देवनागरी कैरेक्टर्स है, जापानीज है, चाइनीज है, अरबिक कैरेक्टर्स है, सब यूज कर सकते हैं जितने भी यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट में बैठते हैं। तो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स सपोर्ट यूनिकोड कैरेक्टर्स आल्सो। देखो ये एग्जांपल, दिस इज अ जापानीज वन, हेलो वर्ल्ड। या ये मे बी ग्रीक में है, ये ग्रीक लेटर्स है, लैटिन लेटर्स, ग्रीक लेटर्स सेम। ठीक है, ये अरबिक लेटर्स है, ये देवनागरी लेटर है, ये राइट। एंड इन सबको आप लोग लॉग को भेजोगे, इट विल डिस्प्ले, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चाहिए तो देखेंगे फ्यू। वी विल अगेन टेक द हेल्प ऑफ AI and I tell like that convert hello world in Japanese, then Hindi, then suppose Arabic, okay, Japanese, Hindi, Arabic, and Greek, and whatever 3 4 strings you'll get, that will just paste it. ठीक है, जैसा भी हिंदी में ये नमस्ते दुनिया, दिस इज फनी ट्रांसलेशन, इट कैनॉट बिहेव लाइक अ ह्यूमन, इतना परफेक्शन पे नहीं जा सकता है। देखो लेट, मैं यहाँ S1 दे देता हूँ, ठीक है, लेट S2 इक्वल टू, जो अरबिक है वो देखेंगे, S3 जो है, S3 सपोज ये ग्रीक में, एंड लेट S4 इक्वल टू जापानीज में है वो देखते हैं।
right? Okay, and then you can try to display them. Console.log S1, S2, S3, S4. See, is it displaying as it is? जैसे है ये देवनागरी में था, ये अरबिक में था, ये ग्रीक में था, ये जापानीज में था, जैसे है वैसे। तो बताना क्या है कि वो सब अलाउड है, इट इज सपोर्टेड इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है, then if you want to access the characters of the string, you can access it by using a square operator and index. So if you have a string, you can just simply write string square bracket index, and the index starts from 0. 0 indexing है, तो 0 से index शुरू होता है, s of 0, s of 1, like that. एक ये way है. Another, you can use normal for loop also. For of, for x of, and then the string. It will keep giving one by one characters in x. s का एक एक कैरेक्टर x में आते रहेगा, अंदर काम करो, ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो. और you can access it using a index for loop also. Like I equal to कहां से शुरू करो, 0 to I less than that string's length, s dot length, I hope you know it, and I plus plus. ठीक है, एंड अंदर फिर कैसे एक्सेस करोगे, s of I. It will give you character at the ith position. तो कितने सारे वेज है, ठीक है, एक एक करके कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए. एक तो अपना ब्रैकेट नोटेशन है, दैट इज स्क्वायर नोटेशन, राइट. सी लेट str इक्वल टू हेलो लिखा है, str of 0 is h, str of 1 is e, str of 4 0 1 2 3 4 is 0. एंड इफ यू गो बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट के बाहर चले गए तो अनडिफाइंड आता है. कुछ एरर नहीं आएगा, it will just give you undefined. Okay, see, let s अभी बना है ऑलरेडी. हाँ, तो चलो s जो पहले से ही बना है उसके ही वैल्यूज देखते हैं. कंसोल डॉट लॉग s of 0 if I write, console dot log s of 4 if I'm writing, or console dot log s of 100 if I give. ठीक है, सी s of 0 j है, s of 4 o है, बट s of 100 है ही नहीं, ये इनवैलिड पोजीशन है, तो इट गिव्स अनडिफाइंड. जैसे जावा में एक्सेप्शन थ्रो होता है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यहां डायरेक्टली अनडिफाइंड देगा. ठीक है, फिर दूसरा एक वे है बाय यूजिंग कैरेट मेथड. कैरेट इज अ मेथड ऑफ दैट स्ट्रिंग, so you can use like this, str dot caret, कैरेट चैरेट मत बोलो, कैरेट ही है, कैरेक्टर बोलते हैं ना, कैरेक्टर नहीं बोलते ना. ठीक है, तो str dot caret एंड फिर इंडेक्स देने का, whatever index you give, it will return the character at that index. वो इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो रिटर्न होगा. तो कैरेट ऑफ 0 will give you h, caret of 1 will give e, caret of 2 will give l. Getting? Now here also if you go beyond the index, जितना भी लिमिट है उसके बाहर, beyond the limit, I wanted to say, if you give the index beyond the limit, then it doesn't give undefined, it just returns the empty string. Just take empty string return करेगा. Returns the character at a specified index. ठीक है, सिंटैक्स इस तरह से, string dot caret of index. एग्जाम्पल देखो, ये अपना स्ट्रिंग है हेलो, caret of 0 is h, caret of 4 0 1 2 3 4 o है, but caret of 10, so 10 is the index beyond limit.
It doesn't give undefined. Instead, it just gives an empty string. Only that is the difference. Okay, that you have to remember. See, console.log s.caret of 4 अगर देता है, but console.log s.caret of 100 दिया. ठीक है, see here it gives the empty string. O तो आ गया, but caret of 100 है नहीं, so it has just given an empty string. Instead of giving undefined, it is giving empty string. Getting? Only that is the basic difference. Okay? Then there are other ways also of accessing characters. जैसे कैरेट है वैसे एक एट है, ये न्यू इंट्रोड्यूस्ड है, मैं लेटर जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस किया. Here also you give the position, you'll get the character. Only the specialities here you can give negative indexes also. Caret को negative index allowed नहीं. And negative index starts from end. Like if your string is hello, HELLO, so positive index left से शुरू होता है and वो zero से शुरू होता है. 0, 1, 2, 3, 4. And negative index starts from the right end, but it starts with -1. -1, -2, -3, -4, -5. तो at में negative index देना allowed है, but caret में negative नहीं दे सकता है. अगर आपने negative भी दिया वो empty string आएगा. देखो इधर. S dot caret of -5 या -3 देता हूं. ठीक है? See, does it give two empty string? ये भी empty string आया और ये भी empty string. But ये -3 का जो एग्जाम्पल है उधर अगर मैंने at यूज किया, ठीक है, it will give you the third character from the right end. ओके, तो ये hello है, तो O पे -1 है, -2 है, -3. It will give you L. नेगेटिव इंडेक्सेस -1 से शुरू होते हैं. ठीक है, सी इज इट गिविंग L because it is starting from the right end. So understand about that at also. Returns the character at a specified index, same like caret. जैसे caret है वैसे ही इंडेक्स दो, वो इंडेक्स प्लेस का कैरेक्टर देगा, बट ये नेगेटिव इंडेक्स भी लेता है. इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2022. 2022 के वर्जन का जो जावास्क्रिप्ट है उसमें ये ऐड हुआ. इसका सिंटैक्स ऐसे string डॉट एट इंडेक्स, सेम लाइक कैरेट. जब तक आप पॉजिटिव दे रहे तो ये सेम कैरेट जैसे ही बिहेव करने वाला है. Get it? अभी कहोगे कैरेट में क्यों नहीं दिया, तो वो चेंज करना पड़ेगा ना, तो इसलिए सिर्फ नया इनकॉर्पोरेट किया. वो कैरेट का पूरा इंप्लीमेंटेशन चेंज करना, इससे अच्छा बेटर है ये नया ऐड किया है इन लोगों ने. ठीक है, सी. एंड यहां भी देखो, अगर लिमिट के बाहर दिया तो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं, ये अनडिफाइंड देता है. whereas caret gives you an empty string. See, at 0 is h, but at -2, -1 पे o है, तो -2 पे l है, तो l. But at 10, 10 is beyond the limit, so it gives you undefined. Getting? See here, note that at allows the use of negative indexes, while caret do not. Caret नहीं allow करता है. Getting, guys? I hope you're understanding. At and caret. Is it clear? Just give me confirmation, guys. Yes, it's clear. ठीक है. तो मेन डिफरेंसेस कभी अगर पूछ भी लिया कि डिफरेंस बिटवीन कैरेट एंड एक्ट, तो ओनली रिमेंबर कैरेट ओनली अलाउज पॉजिटिव इंडेक्स, एक्ट अलाउज नेगेटिव. Caret is from the very first version of JavaScript. At is introduced in ES 2022 version, and at allows at returns undefined if you are accessing beyond the limit. Caret returns empty string if you are accessing beyond the limit.
ठीक है? Okay. Then we have char code at. This will return you the unicode of the character which is at that position. Whatever position you'll pass, it will not return the character. It will return the unicode of that character. Getting? Like if at that position A is there, capital A, then it will return 65 because 65 is the code of A. If there is small a, then it will return 97. If there is 0, it will return 48. So this way, every character is going to have their corresponding unicodes. Why they are done like that? Because in your computer memory, everything is in zeros and ones. हर एक को 0 1 में ही लाना है. तो ये ग्राफिकल सिंबल्स को 0 1 में कैसे लाओगे? तो उसका इक्विवेलेंट नंबर बनाए, फिर नंबर का 0 1 बनाना इजी है. कैन यू कन्वर्ट नंबर्स टू बाइनरी? यस, यू कैन नॉट कन्वर्ट लेटर्स टू बाइनरी. इसलिए ऐसे ग्राफिकल सिंबल्स के इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर्स. एंड फिर नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना आसान है? बाइनरी. बिकॉज नंबर्स जस्ट div 2 करके रिमाइंडर्स कलेक्ट करने हैं ना. ठीक है. Returns the unicode value of the character at a specified index. See, string.char code at index. एग्जाम्पल देखो, हेलो लिखा है. ठीक है. एंड str.char code of 0, 0 पे h है, तो h का यूनिकोड 72. अब चेक भी करके देख सकते हैं. a का 65, यानी a b c d e f g h 7, a के बाद 7 कैरेक्टर्स, तो 65 प्लस 7 कितना होता है? 72 ही होगा ना. गेटिंग? ये e 101 आ रहा है, बट ये स्मॉल e है. e स्मॉल है ना, तो स्मॉल a का कितना था? 97. तो देख सकते हो ना, B, C एंड D, B, C, D एंड E 4 है, तो 97 में 4 ऐड किया, 101 यहाँ पे. गेटिंग? एंड इसमें भी अगर बियॉन्ड लिमिट एक्सेस किया, लिमिट के बाहर अगर यूनिकोड मांग रहे हो, तो वो नैन देता है. ऐसे लूप से आप लोग हर एक का कैरेक्टर कोड क्या है और वो कैरेक्टर क्या है, ये ऐसे प्रिंट भी कर सकते हो. कैन यू डिस्प्ले इट? यस. ठीक है. जस्ट एक सिंपल एग्जांपल. अभी अपने पास ऑलरेडी ये फॉर लूप ही रख देता हूं. सिर्फ यहां एस लेते हैं. एस ही था ना वो? हाँ, एस में ही था ना, HELLO में JELLO. What I'll do is I'll print the character and its unicode. Console.log. Okay, here I'll write dollar brace bracket s of index colon and then dollar. और इंडेक्स से नहीं एक्सेस करना है, कैरेट से एक्सेस करना है, ऐसे भी कर सकते हो. मींस इसे प्रूव्ड है कि वो बैकटिक में भी फंक्शंस कॉल हो सकते हैं. गेटिंग? कैरेट ऑफ आई लिख रहा हूं, और यहां वापस डॉलर ब्रेस ब्रैकेट और उसके अंदर कैर कोड एक्ट ऑफ आई. गेटिंग? तो इट विल डिस्प्ले एच, देन द एच नहीं, जे आएगा, उसका यूनिकोड, ई उसका यूनिकोड, एल उसका यूनिकोड, एल एंड फिर ओ. आई नहीं ना, वो इंडेक्स है. ओके, एक बात है, फिर ये आई ही कर दो. सी, इज इट डिस्प्लेइंग? जे का यूनिकोड 74, ई का 101, एल दो बार आया, उसका यूनिकोड 108, ओ का 111. ठीक है. टैली करके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई. राइट? देन some more things in the next session, like string concatenation. Then there are case conversion functions, searching functions, okay, extracting functions, means मुझे part of the string extract करना है, तो वो सब चीजें भी पढ़ेंगे. So string is a very big topic, but it's an important topic, as I said. And lot of time in interviews, if they give you programming questions, so mostly the programming questions are on strings.
maximum time, the programming questions are based on strings. So once we complete, I'll take some exercises on strings. ठीक है?